these are the topics that are extremely important anywhere, wherever you go. Anybody can ask you about these topics. So today we will talk about the voice of market, and here we will our focus will be on the benchmarking. So strategic quality planning, the voice of market. So what do we mean by the voice of market? We will talk about this. We will in this lecture we will talk about gaining insight through the benchmarking, what actually the benchmarking is, the purposes of benchmarking, difficulties in monitoring and measuring performance, common benchmark performance measures, business process benchmarking, leading and managing the benchmarking effort, baselining and engineering, and problems with benchmarking. So we will cover most or all of these topics here. So what do we mean by the voice of market? In strategic quality planning model, you know that a company have a particular mission, and in order to achieve that mission, they must have the strategic plan. Because mission, as I told you, that mission is actually a destination, the goals and objectives you have to achieve, and strategic plan tells you how to achieve those goals and objectives or that mission. So the company mission, and company, in order to achieve the company mission, we will have the strategic plan. Yes, sir. Okay, in strategic quality plan, we can have the two important factors: the competitive forces here and customer needs. So obviously, we have to consider the customer requirements and needs, because customer is everything, and customer needs should be considered whatever we do. The competitive forces, we should also think about the competitive forces, the competitors that are available in the market. So we have to consider these two things in the strategic quality plan. One of our best sources of information can be other companies. How to make the strategic a very efficient strategic plan. For that we need some information, and there are different sources of information. One of our best source of information can be other companies, our competitors. By understanding our competitors, we begin to understand the marketplace better. तो कंपटीटर जो है वो, या जो बाकी कंपनीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती हैं। वहां से हमें पता चल जाता है जहां पे हम लैग करते हैं, जहां पे हमारे स्किल्स जो है या नॉलेज हमारी इतनी नहीं होती, तो वो हम उनसे सीखने को मिलता है। वहां पे हमें रिस्क का पता चल जाता है कि फ्यूचर में हम कौन कौन से रिस्क जो हैं वो आ सकते हैं, और अगर रिस्क का सामना हमें करना पड़े, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, तो उन चैलेंजेस और रिस्क को हम किस तरह जो है फेस कर सकते हैं, और इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं इन फ्यूचर. सो one of the best source of information can be other companies. So let's talk about the benchmarking. In benchmarking, we will introduce the benchmarking, like we will define it, we will talk about its origin and importance of the benchmarking. Then we will talk about the benchmarking process, benchmarking methodology, types of benchmarking, criticism on benchmarking, and advantages and disadvantages of benchmarking. And at the end, we will conclude the whole benchmarking process. So let's introduce the benchmarking. Benchmarking is a topic of general interest in quality management. So not only in quality management, not in producing the products or providing the services. You can use the benchmarking everywhere.
बेंचमार्किंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन लाइफ में जो है आप बेंचमार्किंग को यूज कर सकते हैं. Benchmarking has reached widespread diffusion and is now considered as one of the most powerful tools for promoting process improvements and re-engineering in many prominent organizations. बेंचमार्किंग जो है ये एक ऐसा टूल है कि जिससे हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है उसका एक हिस्सा जो है वो बेंचमार्किंग भी है. बेंचमार्किंग ही जो है हम कंटिन्यूस और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं और री इंजीनियरिंग करते हैं. री इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप अपने, अगर आपका एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आप डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स, और या सब पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं और फिर उनको जो है आप एनालाइज करते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं. सो ये बेंचमार्किंग हमें वहां पे हेल्प करता है. इट इज ए पॉपुलर मेथड फॉर डेवलपिंग रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिंग गोल्स. Let's define the benchmarking. There are, many definitions according to different perceptions and applications of the technique and philosophy. Benchmarking, we can define the benchmarking as a process for improving performance of any organization, a process for improving performance of any organization by continuously identifying, understanding, and adopting outstanding practices and processes inside or outside the organization. यहाँ पे अगर मुझे एक मिनट दे, थोड़ा सा मैं ये म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो. मुर्तजा, मैं सिर्फ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. यस सर. ओके, बाकी जो है मैंने म्यूट कर दिए यस सर. ताकि डिस्टरबेंस ना. ओके. So, benchmarking is defined as a process for improving performance of organization. किस तरह हम performance of organization को improve करते हैं? By continuously identifying, understanding, and adopting outstanding practices and processes inside or outside the organization. Obviously, if you want to improve the performance of your organization, so you can improve it by continuously identifying, understanding, and adopting outstanding practices. You have to identify the outstanding practices and processes that may help you to improve the performance of your processes or your organization. Similarly, you have to understand, those practices and processes and adopt those practices and processes as well. So तभी आप जो है अपने performance को improve कर सकते हैं, and this whole thing is actually benchmarking. So benchmarking is basically learning from others. दूसरों से आप सीखते हैं, उनकी प्रोसेसेस, उनकी प्रैक्टिस को आप ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे आप आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसको इसी वजह से जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती है. Yes. So the term benchmarking was first adopted to business practices by Xerox in 1979. In 1979, Xerox ने जो है ये जो term है benchmarking ये adopt किया था, and Xerox's aim was to evaluate itself, to identify its strengths and weaknesses, adopt to constantly changing market conditions. Due to the dynamic changes, due to this dynamic environment, what they have to improve themselves. How? By identify their strengths and weaknesses and adopt the most suitable practices that may improve performance. So that was actually the Xerox aim, and they have adopted this terminology, this term. So let's talk about the importance of benchmarking. Benchmarking allows you to discover the gaps in your performance when compared with someone else. Okay, obviously, when you are comparing yourself with someone else, then you would be able to discover the gaps in performance. आपकी और उनकी जो performance है, वहाँ पे आपको gaps नजर आएंगी.
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में मैं मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट जो है वो ओपन कर रहा हूँ, या मेरा एक मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट है और उसको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो उसको मैं इम्प्रूव इस तरह कर सकता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लम्स या आईबीए की मैनेजमेंट साइंसेस को मैं देखूँ और उनके साथ में अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूँ, ठीक है, वो एक किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे लिए। तो अगर मैं वहां पे अपनी परफॉर्मेंस को और उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करूं, तो वहां पे मुझे बहुत सारे गैप्स हर जगह पे जो है, चाहे वो कोर्स आउटलाइंस हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस हैं, चाहे वो क्लास टाइमिंग है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है, वहां पे बहुत सारी गैप्स जो है हम डिस्कवर करेंगे और उसी गैप्स की को आइडेंटिफाई करके फिर हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज करेंगे टू फिल दोज गैप, और तभी जो है हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी स्टैंडर्ड तक लेके जा सकते हैं। द बेंचमार्किंग यूज्ड फॉर वाइड रेंज in organization for many aspects with different ranking. Sorry for some spelling mistakes. Okay, so the benchmarking used for wide range of organization for many aspects with different ranking is showing in the table. So this is actually the benchmarking, benchmark business processes, और इन business processes की जो ranking यहाँ पे अगर आप देखें तो वो की गई है। Like for customer service or satisfaction, that is the most important. So the customer service and satisfaction is one of the most important thing we have to improve, during the benchmark. The second one is information system or technology. On third priority, we have the employee development and training. The process improvement and management is on the fourth, and call centers help desk, that is on 5, performance measurement and improvement is on 6, and इसी तरह जो project management है that is on rank 10. So yes, customer is again very important here, और यहाँ पे benchmarking में हम कोशिश करते हैं कि हम customer satisfaction ही पे ज़्यादा focus करें, और फिर बाकी जो है priorities, based on priority जो है हम different processes की benchmarking करें. Okay. So benchmarking process की कुछ basic steps है. The first step is planning. The second one is analysis. The third one is integrating, and the fourth one is action and monitoring. So you can see, briefly we can discuss it here. The benchmarking process, that is the planning, data gathering, and analysis. You have to first plan. Okay, during every before any project or task you want to perform, you have to plan. And after planning you will have to gather the data. You can gather the data from your past project, or from the projects of, or from the task of your competitors, and then you will have to analyze this data. Okay, you will have to integrate it, and based on that data and that analysis or the results, you can take actions, and you can as well. So that is actually the benchmarking process. Let's talk briefly discuss about the planning. So planning is establish the benchmarking roles and responsibilities. In planning we have to establish the benchmarking roles and responsibilities. तो बेंचमार्किंग है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं हम एस्टैब्लिश करते हैं. डिसाइड व्हाट यू विश टू बेंचमार्क. यू हैव टू डिसाइड कि आप क्या बेंचमार्क करना चाहते हैं, या कौन सी बिजनेस प्रोसेस को आप यहाँ पे बेंचमार्क करना चाहते हैं. So that is something important to be considered in planning. The third one is to identify the process to benchmark. आपने आइडेंटिफाई करना है which process to benchmark. Benchmark process को आपने आइडेंटिफाई करना है. We will discuss the benchmark processes as well. Decide against whom you need to benchmark. कि किसके अगेंस्ट आप बेंचमार्किंग कर रहे हैं. जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा मैनेजमेंट साइंसेस है और अगर मैं लम्स के साथ लम्स के सुलेमान दाऊद बिजनेस स्कूल के साथ अगर उसकी बेंचमार्किंग करना चाहता हूं, तो मुझे ये डिसाइड करना है इन प्लानिंग में कि किसके साथ मैंने बेंचमार्किंग करनी है. डॉक्यूमेंट द करंट प्रोसेस. आपका जो करंट प्रोसेस आपका है उसको आपने डॉक्यूमेंट करें
कि यार करंटली मेरी परफॉर्मेंस किस तरह जा रही है, मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ, एंड आइडेंटिफाई आउटपुट्स रिक्वायर्ड, कि क्या आउटपुट्स आपको रिक्वायर्ड है. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग एज वेल during the planning. Determine the data collection methodologies. You have to determine the data collection methodologies कि मैं किस तरह से डेटा जो है वो कलेक्ट करता हूँ. मेरी डेटा कलेक्शन की मेथोडोलॉजी कौन सी होगी. मैं डेटा अगर कलेक्ट करूंगा तो मैं किस तरह कलेक्ट करूंगा. क्या मैं डेटा कलेक्ट करूंगा इंटरव्यूज के थ्रू, मैंने वहां जाके फेस टू फेस इंटरव्यूज करनी है, या मैंने कुछ क्वेश्चनियर्स भेजने हैं, या मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी है, उसके बाद बेस पे मैंने डेटा कलेक्ट करना है, क्या करना है. तो ये जो है ये भी आपको डिटरमिन करना है. The next one is analysis. So in analysis you have to normalize the performance data. आपने अपनी डेटा को जो है वो normalize करनी है, और इसकी बहुत सारे टेक्निक्स हैं. Construct a comparison matrix to compare your current performance data with your partner's data. Yes, आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, एक कंपैरिजन मैट्रिक्स बनानी है. एक अगर जिस तरह अगर आप इसकी एक मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं ताकि आप समझ लें, लाइक टेबल के टेबल में एक कॉलम पे आप लिखते हैं अपनी एक डिफरेंट कॉलम्स हैं, और उन डिफरेंट कॉलम्स में आप डिफरेंट बिजनेसेस आप ऐड करते हैं कि जिसकी आपने बेंचमार्किंग करनी है, और उसकी रोज में आप जो है अपनी और जो आपकी कॉम्पिटिटर है या जो आपका जो बेंचमार्क पार्टनर है उसको आप लिखते हैं. तो आप उस टेबल में आप कंपैरिजन करते हैं हर एक बिजनेस एरिया की कि कौन सी बिजनेस एरिया मेरी कैसी है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है. सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए कंपैरिजन मैट्रिक्स टू कंपेयर योर करंट परफॉर्मेंस डेटा विद योर पार्टनर्स डेटा. Identify outstanding practices. You have to identify the best performance practices, the outstanding or excellent practices आपने जो है वो आपने identify करने हैं. And then you have to analyze the gaps, that what are the gaps between yours and your benchmark partners performance. ठीक है, आपकी और उनकी परफॉर्मेंस में गैप्स क्या है. सो यू हैव टू एनालाइज दोस गैप्स एंड यू हैव टू कंसीडर दोस गैप्स एज वेल. सो दिस इज a gap analysis, and we will talk about it later. Analyze factors that create the gaps. You have to analyze the factors that create the gaps, कि ये जो gaps हैं परफॉर्मेंस में, ये gaps किस वजह से हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से हम वो गैप्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं. और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, यानी अगर उन्हीं फैक्टर्स को आप कंसिडर करें और उसी पे काम करें, उसी को आप इंप्रूव करें, सो यू कैन फिल दोज गैप्स. और ऑब्वियसली अगर आप गैप्स को फिल करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है. द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन. Define set stretching targets. आपने टारगेट्स को डिफाइन करना है कि आपकी टारगेट क्या है. विजन एंड अल्टरनेटिव प्रोसेस. आपने एक अल्टरनेटिव प्रोसेस जो है उसको कंसिडर करना है, उसको सेट करना है. कंसिडर द बैरियर्स टू चेंज. क्या बैरियर्स हैं, अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके दरमियान बैरियर्स क्या आती हैं, क्या हर्डल्स हैं. You have to consider that as well. Plan to implement the changes. You have to plan to implement the changes. अगर आपने changes करनी है आपको, क्योंकि आपने gaps identify कर लिए, तो जब आपने gaps identify कर लिए हैं in analysis जो section 2 था, phase 2, आपने जो analysis थी वहां पे आपने changes gaps identify की, तो उसमें आपने कुछ changes करनी है. अब अगर आपने कुछ changes करनी है तो उसको barriers को भी आपने identify किया, और उन बैरियर्स को किस तरह आपने उनको टैकल हैंडल करना है वो भी आपने कंसिडर करना है, वो भी आपने उसके लिए एक तरीका जो है वो निकालना है. एंड प्लान टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस. फिर आपने उसकी प्लानिंग करनी है कि ये जो चेंजेस हैं हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है, तो you have to plan that as well. And the last one is action and monitoring. So in action and monitoring we are talking about the implementation planning. You have to implement the plan. Okay, आपने implement करना है और आपने monitor भी करना है कि जो planning है
जिस तरह आपने प्लान किया था आप उसी तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अपने प्लान के that means that you are stick to your planning or not. So you have to monitor that thing as well. Collect the data. Yes, you have to collect the data. Evaluate the progress. Yes, ऑब्वियसली आपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना है कि जिस तरह आपकी प्रोग्रेस आप चाह रहे थे, जिस तरह आपने प्लान किया था उसके मुताबिक आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इटरेटिव चेंज, you have to repeatedly you have to do some changes. Iterative mean repetition, आपने repeat करनी है changes। जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगल स्टेप में जो है आप हर एक चीज को परफेक्ट करें। You have to do some changes in different sections or different steps, so you have to do those changes. So iterative changes जो है आपने परफॉर्म करनी है। Questionnaire to apply benchmarking. I would like to just show you the questionnaire. That is actually the sample. ये एक sample है questionnaire that you can use for benchmarking. So the questionnaire to determine if organization is ready for benchmarking or not. So that this is a the sample for that questionnaire. You can see we have the four scale 4-point Likert scale है जिसमें the first one is most, the second shows some, few, and none. So opposite to the question, you have to consider or take one of the most suitable option. ठीक है, so ये जो है ये questionnaire है that you can use for benchmarking. Let's talk about the benchmarking methodology. Examples of typical methods. The first one, identify your problem area. These are very important steps or methodology, so you have to give a complete attention to this particular methodology. So okay, let me see. Okay, we have just 7 participants. Okay, example of typical methods. The first one is identify your problem areas. You have to identify your problem areas कि आपकी problem areas कहाँ कौन से areas पे problems हैं आपके processes में या within your organization or businesses. The second thing is identify other organization that have similar processes. You have to identify the other organization that have the similar processes. यानी जो प्रोसेसेस आप परफॉर्म कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करें कि वो भी वही प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लीडर्स इन दिस एरिया। आप फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आप उसमें आइडेंटिफाई करें जो कि उन एरियाज में लीडर्स हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी मैनेजमेंट साइंसेज में लीडर, in Pakistan we have the LUMS or IBA, so you have to identify the organizations that are leaders in that particular area. Survey organizations for measures and practices. You have to survey the organization for measures and practices. आपने उनकी सर्वे करनी है उन ऑर्गेनाइजेशन की for measures and practices. आपने उनकी स्टैटिस्टिक्स जो है हासिल करनी है, आपने उनकी प्रोसेसेस देखनी है, प्रैक्टिसेस जो है उसको ऑब्जर्व करना है और उसमें जो है वो सारे जो गैप्स वगैरह है उसको आपने फिर निकाल सकते हैं। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स। आप एक अप्रोप्रिएट बेंचमार्क सेलेक्ट करें जो कि हम आगे पढ़ेंगे। एंड finding the source of for benchmarking. You have to find the source for the benchmarking as well. Visit the best practice organization to identify leading edge practices. Implement new and improved business practices. ठीक है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए और इम्प्रूव बिजनेस प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करें और इसी तरह जो है आपकी बेंचमार्किंग होगी और आपकी प्रोसेसेस जो हैं या ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकेगी। सो बेंचमार्किंग में हमारे पास 2 किस्म के फर्म्स होते हैं। एक इनिशिएटर फर्म होता है और एक टारगेट फर्म होता है। So we have 2 types of firms in benchmarking. We call the first one initiator firm and the second one is the target firm. What is actually the initiator firm? It is
the firm that initiate contact and studies another firm. For example, चले मैं इसको डिस्कस करता हूँ target firm को, and then I will give you again the same example. The target firm is the firm being studied. Being studied. It is also called a benchmarking partner. So initiator firm means I will try to give you again an example. For example, if we consider the two universities, the Seacoast University and the LUMS University, and if we select one of the department in both or area in both the universities, and that is, for example, the Management Sciences department. So हम improve करना चाहते हैं अपनी Management Sciences department को. Different areas within the Management Sciences department को अगर हम improve करना चाहते हैं तो हम initiator firm हुए. हमने contact करना है LUMS के साथ, हमने study करना है उनका department, Management Sciences department. तो हम initiator firm हुए Seacoast University. और जो LUMS है वो हमारी टारगेट फर्म हुई है, वो हमारी टारगेट फर्म है Seacoast यूनिवर्सिटी, और उसको हम बेंचमार्किंग पार्टनर कहते हैं क्योंकि उसको हम स्टडी कर रहे हैं फॉर इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस. ओके, बेंचमार्किंग मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम 1-2 मिनट के लिए अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे जाएंगे. मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. सर इसका एग्जांपल आप ये लम्स वाले देते, क्या ये कंपनी वगैरह नहीं होते इसको? कंपनीज भी हो सकती है, ये तो मैंने आपको जस्ट एन एग्जांपल दी. आप कोई भी कंपनी, और ये तो है ही कंपनीज के लिए, बल्कि मैंने आपको जेरोक्स का बताया जो कि एक कंपनी थी. तो ये तो मैंने आपको आपकी समझाने के लिए जस्ट जो है ये बताया है आपको, या ये एग्जांपल दिया है. और ये एग्जांपल मैंने इसलिए आपको दिया है कि यू बिलोंग टू द मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट, और बिल्कुल तो आप इंडस्ट्री जो वाले है एग्जांपल लेते समझ हैं. सकते हैं. जी सर हमें कंपनी की एग्जांपल दे कोई भी कंपनी जिनके प्रोसेसेस सेम हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं फौजी फर्टिलाइजर्स लेता हूँ और फातिमा फर्टिलाइजर्स लेता हूँ, या मैं फौजी फर्टिलाइजर्स लेता हूँ या एंग्रो फर्टिलाइजर्स लेता हूँ, ठीक है, तो आप कोई भी, दोनों फर्टिलाइजर्स हैं, दोनों तकरीबन सेम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए. दोनों का प्रोडक्ट क्या है? फर्टिलाइजर्स ही बनाना है, ठीक है. तो अगर दोनों फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम होंगे उनके प्रोसेसेस. थोड़ी हम बहुत मोबाइल का भी ले सकते हैं, मोबाइल कंपनी वगैरह कुछ भी ले सकते, कुछ भी. पोलो और सैमसंग क्वालिटी देखेंगे ना. आप ले लें ओप्पो का ले लें और सैमसंग की आप बेंचमार्किंग कर ले फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो यस सर, ये जो है ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में, किसी भी. बस इसके लिए कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया वो ये थे कि आपने जो है कंसीडर करना है, देखना है कि कौन से स्ट्रेटेजिक क्वालिटी वो आपके प्लानिंग है. सिमिलर है कि नहीं है. वो जो आपका टारगेट फर्म है सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाता है या सिमिलर प्रोसेसेस उनके हैं कि नहीं है. बस आपने ये चीज जो है जरूर समझ गए सर. ठीक है. अच्छा, अभी 1 मिनट के लिए ये शायद रुक जाएगा और फिर हम जो है दोबारा से जो है 1 मिनट बाद दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. कैसी है इसके लिए? नहीं, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. सर जी और सर 40 मिनट बहुत है. 11:20 तक हम पढ़ेंगे. सो वी हैव 9 मिनट्स, तो 9 मिनट्स तक हम